Now the Ram Mandir consecration shall take place on the 22nd of January in a grand ceremony in Ayodhya. Ahead of this, people have flocked to the temple town from across the country, and excitement is bubbling on the ground. As the grandeur on the temple of the temple marvels, the Pran Pratishtha ceremony shall be held with great pomp. Pran Pratishtha translates to establishing the life force or bringing the deity to life, and is a ritual performed to invoke a deity into an idol, transforming it into a sacred and divine entity. Well, ahead of this ceremony, several key rituals are being held. Let's quickly take a look at what these rituals are. So this, of course, is the grand lead-up, the grand build-up to this event, which will, of course, be taking place on the 22nd of January. So these are the 7-day rituals. Now, on the 16th of January first, there will be a host appointed by the temple trust to conduct an atonement ceremony. So this will be the start of the rituals. Also on the 16th, the atonement ceremony then will be conducted on the banks of the Saryu river there in Ayodhya. So this will be happening on the first day in the build-up, the 16th of January. The 17th of January then will see the idol of the Ram Lalla, which will be carried to the Saryu river once again in Ayodhya. And the Ram Lalla idol will be carried in a Mangal Kalash, in fact in a procession which will go through the temple town to the Saryu river. The 18th of January will see rituals on the day commencing with a Ganesh Ambika Puja and a Varun Puja. So these two pujas will of course be taking place in the first half of the 18th of January. Then there will be a Matrika Puja. That is, the 7 goddesses will be worshipped as well. So a puja of the 7 goddesses then will also be carried out on the 18th of January. A Brahman Varam ritual will also be taking place. A Brahman Varam ritual will also be taking place that day to evoke knowledge, and that will also be taking place on the 18th of January, apart from a Vatsya Puja ritual, which will remove obstacles in the path of the consecration ceremony. The 19th of January, meanwhile, will see an Agni Stapna. Now, an Agni Stapna will be an installation of a sacred fire to purify the atmosphere of the temple and the surrounding areas as well. Also on the 19th of January, a Navgrah Sthapna will take place. That is a prayer to ensure peace as well. Meanwhile, on Havan too will be performed on the 19th of January. That is a ritualistic burning of offerings, which will also be taking place on the 19th of January. So Havan as well will take place. Meanwhile, on the 20th of January now, the Sanctum Sanctorum is to be washed with the holy water of the Saryu river. So it will be clean, it will be purified, it will be washed. The inner Sanctum Sanctorum, where of course that Pran Pratishtha Puja will take place on the 22nd with water from the Saryu river. A Vatsu Shanti ritual will also take place to clean the land on the day as well. The Ram Lalla idol will be worshipped via food grains as well, Anna Divas as well, on the 20th of January. This is also a ritual which will be taking place 2 days before the Pran Pratishtha. Meanwhile, on the 21st of January, the Ram Lalla idol will be bathed using water from 125 urns. Meanwhile, also the Shaya Divas ritual will be performed to put the deity to sleep. This will take place on the 21st of January. And the 22nd of January then will see the deity of Ram Lalla, which will be worshipped in the morning before the Pran Pratishtha takes place later in the day. And it will of course be consecrated in the Mrigashira Nakshatra in the afternoon. So these of course are the rituals which will be performed, 7-day traditions which will be carried out in Ayodhya ahead of the big 22nd day, of course. To decode this further, we have joining us now Rahul Ishwar, Hindu activist. Also with us is Vedveer Arya, historian and author. Acharya H.S. Rawat, Hindu Dharam Guru, also joins us live. Acharya Pramod Mishra, Hindu Dharam Guru, is also live with us now. Rahul Ishwar, it's a ritualistic build-up to this 22nd of January with several important occasions taking place before the actual Pran Pratishtha, the actual consecration. Absolutely. Jai Sri Ram. May we all have Lord Ram's blessings. This is a holy occasion that is happening in our nation, an occasion that only comes in once a century. Our father of the nation, Mahatma Gandhi, was a Ram Bhakt who wanted Rama Rajya, and Ram was called Imam-e-Hind by Muhammad Iqbal. So it's a great cultural, civilizational, spiritual, tantric occasion too. As we all know, it's a consecration of a temple. So there are certain tantric practices which is involved. Prana Pratishtha is
one such thing. As you pointed out earlier, it is bringing life to an idol, making idol into a deity. That's the correct vision of it. That idol, which is either made of different materials, is turned into a devata or a deity, and that's a very significant and spiritual aspect of it. It's actually attributing consciousness, life, prana, in different words we can say, to that particular deity, and we hope this great occasion will unite us Indians in a great way. And as you rightly said, there are a certain section of rituals, achar anushtanas, that needs to be followed for the holistic well-being, for the well-being of the society, for the well-being of the body, mind and soul of the people who are involved. May this occasion cleanse us, bring more holiness, bring more spirituality and harmony to our nation, and that's what a normal Ram Bhakt can pray for. Right. Let me, in fact, also quickly take that across to Vedveer Arya as well. Vedveer Arya, how important are these rituals in the lead up to the 22nd of January? Historically, in India, there are many occasions. Very great kings also perform this kind of a Prana Pratishtha in various temples, like starting from Chola period, Brihadishwara temple, and even going back to the Chalukya period when Aihole temple and many other temples. Historically, the places, especially Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Avantika, these are the places actually our great Mahapurushas who was born in India and they built this civilization. So these places are very, very important. Like Ayodhya, the place that is the birthplace of Sri Rama, who not only established an ideal a king, how an ideal king has to behave, an ideal brother, ideal son. So many great, because in India, we worshipped only those great kings who followed a path of dharma, not great conquerors. So it is very important and actually the Prana Pratishtha is a ritual through which we are actually want to see the Sri Rama is actually coming to the temple and residing in that idol. So this is the various rituals are attached to that. But historically, since I am a historian, these places are very, very important. Even Jyotirlingas also, those places where Shiva stayed for a few days, those places. That's why we worship those places as well as the idols who are actually done this through this ritual. We do the Prana Pratishtha so that we can actually see Sri Rama who lived during the Treta Yuga period. We can feel him. We can even do the bhakti sitting there so that we are actually sitting face to face. That kind of a feeling comes when you do the Prana Pratishtha. So it is extremely important for every Indian. And 22nd January would be the, I think, our greatest day for us. Yes, it certainly will, of course. Acharya Rawat, let me bring you in here. How important are these rituals, Acharya Rawat? Obviously, a Pran Pratishtha is not something which happens overnight. There has to be a build-up to it. There has to be, a method to it. And this is something which has been happening for centuries, for years, in many of the biggest pilgrimage places in India and South Asia. जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको जी, प्राण प्रतिष्ठा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य दोनों चीजें। हमारे यहाँ पर पराविज्ञान और अपराविज्ञान का एक रहस्य होता है। कुछ चीजें सामने दिखाई देती हैं। जब मूर्ति बनके तैयार होती है तो उस पर गंदे हाथ लगते हैं, छेनी हथौड़े लगते हैं। उसको सबसे पहले शुद्ध किया जाता है और आज से उसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले उसको पंचगव्य के द्वारा पूरा साफ किया जाता है और कल से सबसे पहला जो वास होगा वो जल का वास होता है। हमारे शरीर में जैसे 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसी तरीके से उन 5 चीजों का वास भी यानी मूर्ति के अंदर किया जाता है कि जैसे मनुष्य का शरीर बनता है वैसे मूर्ति के अंदर पहले जल का वास होगा, उसके बाद में अन्न का वास होगा, फिर फूलों का वास होगा, फिर शहद का वास होगा, दूध का वास होगा, फिर शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से फिर स्नान कराया जाता है। तो ये एक विधि होती है। 8 दिन के भीतर भीतर उतने समय तक लगातार मंत्र जाप होते हैं। मंत्रों की ध्यान के साथ में उस मूर्ति के चारों तरफ
मूर्ति के त्रिनेत्र के ऊपर, मूर्ति के नाभि चक्र के ऊपर हम वहां पर मंत्रों का जाप करते हैं। लगातार मंत्र चलते रहते, लगातार मंत्र चलते रहते। वहां पर एक हाई एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। जब बहुत सारे ब्राह्मण एक साथ मंत्रों का जाप करते हैं तो उस पॉइंट पर हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हाई एनर्जी को प्रोड्यूस होते होते वो मूर्ति के अंदर समाहित होनी चाहिए, एक केंद्र बन जाता है वहां पर एनर्जी का। जैसे आपने देखा हो ना, बवंडर आता है तो वहां पर एक पूरा चारों तरफ से बहुत ज्यादा हवा इकट्ठी होती है। ऐसे ही मंत्रों के जाप से वहां एनर्जी का बहुत हाई लेवल हो जाता है। और फिर उसके बाद में जब जिस दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम के आंखों पे जो पट्टी बंधी होगी उसको शीशा दिखा करके खोला जाता है, उससे पहले अग्नि के वास के अंदर फिर एक हवन होता है। हवन के अंदर जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों में लगातार हम मंत्रों की जो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र भी और पौराणिक मंत्र भी, ओम अश्ये प्राणा प्रतिशंसो अश्ये प्राणा छरंतु छ से देवत्तमर्चाए माम हेतु कश्चन, यानी ये प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र लगातार चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। मूर्ति के चारों तरफ गर्भगृह के अंदर मूर्ति को स्थापित होने के बाद में फिर लास्ट के जो 84 जो सेकंड जो कंसीडर किए गए उसमें आदरणीय मोदी जी वहां से शीशा दिखा करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो अंतिम जो पल होता है उसकी पूर्ति करते हैं। तो ये जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, इनका सबका एक वैज्ञानिक आधार होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मंत्रों से मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। अकबर जो राजा थे उनके यहाँ पर नवरत्न थे, नवरत्नों में एक तानसेन होते थे। तानसेन को इतना अभ्यास था अपने गाने का, अपने रागों का, तो जब वो राग दीपक गाते थे तो उस समय ऐसा बताया जाता है कि उनके महल में सारे जो दीपक थे वो जल जाया करते थे, यानी बिना अग्नि के। आज भी ऐसे साधु संत हैं जो मंत्रों के जाप के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, उनको माचिस की या लाइटर की या अग्नि की जरूरत नहीं होती है। और इसी प्रकार से जब मेघ मल्हार गाया जाता था तो उस समय पर बारिश हो जाती थी। तो मंत्रों में, वेद मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, वो ऊर्जा को प्रोड्यूस करती हैं। और जब वो ऊर्जा मूर्ति के अंदर आ जाती है तो फिर वहां पर जब हम अपनी याचना लेकर के जाते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक सनातन धर्म के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का, मूर्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है। जी बिल्कुल। आचार्य प्रमोद मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आचार्य प्रमोद मिश्रा, on why the Pran Pratishtha is significant, what the historical context to this has been, and also, sir, this build-up. Almost 7 days of rituals taking place, from the Saryu River to processions to, purification at the Sanctum Sanctorum, a lot which will be taking place in Ayodhya all the way from the 15th or the 16th of this month. बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे पूजनीय रावत जी बता रहे थे जी कि किस विधान से, किस विधि से हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं और प्रतिष्ठा करने का महत्व क्या होता है, तो बिल्कुल वही टॉपिक पर मेरा भी वही उत्तर है लगभग। क्योंकि जो प्रतिष्ठा की विधियां होती हैं, आज भी हम लोग जब किसी ईश्वर की तरफ या किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी हो, जब वहां जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो एक अंदर से एक हमारी आत्मा की आवाज होती है, एक मन की आवाज होती है कि जिस भी कामना के लिए हम यहाँ आए हैं, जिस भी कामना को लेकर हम भगवान आए हैं, वह कामना हमारी पूर्ण हो। वह कामना कब पूर्ण होगी? जब ईश्वर का आधान, जब प्रतिष्ठा के बाद ईश्वर वहां विराजमान होंगे, उस मूर्ति में विराजमान होंगे, तभी हमारे नेत्रों से, उनके नेत्र में जब हम दर्शन करते हैं, अपने आप को वहां देखते हैं, तो वहां से एक आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से वो हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में वह विचरण होती है। तो इसीलिए प्रतिष्ठा का एक अपने आप में महत्व होता है। दूसरी बात, जो क्रम बताया कि किस तरह से, किस क्रम में, तो यहाँ पर जिस तरह से कि वास होता है। अब यहाँ पर रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो 5 तत्वों से यह शरीर रचा गया है। उन तत्वों से अलग अलग तत्व हैं, कि जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व। तो उन तत्वों के माध्यम से भी हम उस प्रतिष्ठा के दौरान, प्रतिष्ठा में उस तत्व हम वहां पर आधान करते हैं। जैसा कि अब सैया अधिवास होता है, भगवान को सैया पर लिटाया जाएगा, ऊपर से कुछ वस्त्र, गर्म वस्त्र उठाए जाएंगे। फलाधिवास होता है, फल के अंदर भगवान को पूरा तरीके से मंत्र और विधियों के तरीके से भगवान को ढका जाएगा पूरा तरीके से। पंचामृत के से भी जो स्नान होता है, वहां पर कहते हैं पंचामृतम मया नीतम पयो दधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृतम प्रतिगृहताम।
तो पंचामृत जो क्रम होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से, यह भी वो एक ऊर्जा है। पंचामृत मैंने 5 तरह का अमृत, दूध भी अमृत जैसा काम करता है, दही भी अमृत जैसा काम करता है, घी के अंदर जो अमृत तत्व है, शहद के अंदर अंदर जो अमृत तत्व है, शक्कर के अंदर जो अमृत तत्व है, यह सब तत्व धरती माता हमें प्रदान करती हैं और इन तत्वों के माध्यम से उन मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। पुनः ये सब क्रम तो प्रतिष्ठा का जो समय है वो तो 22 तारीख को है, कि उससे पहले जो क्रम होता है या उस मूर्ति में प्राण डालने का या ऊर्जा पैदा करने का या ऊर्जा डालने का एक क्रम होता है। जिस तरह से यह ऊर्जा से समाहित जब मूर्ति होगी, उस मूर्ति के सामने जब हम खड़े होंगे तो हम भी ऊर्जावान हो जाएंगे, क्योंकि उस मूर्ति में ऊर्जा है तो वह ऊर्जा भी हमें प्रदान करेगी। जब भी हमारा हाथ जुड़ता है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वह ऊर्जा हमें प्रदान करती है। जी, absolutely. And Rahul Ishwar, there is a historical context to this as well. This happens in all Hindu temples, or is it something special which is being done for the Ram Mandir? I mean, of course, every temple is unique because the deity is unique. Yes. Every temple has something called a Mula Mantra. Mula Mantra is something like, in modern language, can be the password to unlock the power of the deity. That Mula Mantra is there. There is a Dhyana Sloka. Dhyana Sloka is the particular amount of sloka that is specially for the deity. There will be some sampradayas that is going to be set by the chief priest and the astrologer and the particular temple committee or devasam or whoever it is. These are some of the basics of the temple, as all the acharyas who have a privilege to sit with, pranams to all of them, who said. So every temple have their own, this own kind of uniqueness. One Rama temple will not be equal to another Rama temple, or one Devi temple will not be equal to another Devi temple. Everything will have their own uniqueness. And all these puja and sampradayas will be unique. And the core point here is, please remember, temple are not places of, with due respect to every other faith, temples are not places of merely coming together and worshipping. Temples are more of energy centers. That's the core of the temple worship. Unlike the various other places of worship, temple is an energy center where we derive energy. That's the reason why in Malayalam we call it Chaitanyam. Chetana, Chaitanyam, spirit, energy. We can describe it through the various ways, but this cosmic energy can definitely be done avahana, or avahana basically means that energy can be channelized to this particular deity. This is the core form of the tantric worship. There are even many branches of Hinduism who doesn't agree with this vision. For example, the Arya Samajis, the Brahma Samajis, they are not very much for the idol worship or the temple worship. May that be. We also respect that. The greatest of the Vedantis, Swami Vivekananda's guru, was the greatest of temple worshippers, Sri Ramakrishna Paramahamsa. And Vivekananda might be a Jnana Yogi, might belong to the Advaita Vedanta branch, but at the end of the day, his guru was a poor sadhu Brahmin who was, worshipper of Kali. So every branch has its own sanctity, and every temple worship also has a tantric element. There is a Vedic element, there is a tantric element. So temple worship has this tantric element where energy is consolidated in a particular space. This is the core. And please remember, this is the oldest form of worship anywhere in the world. We can see the ancient Turkeys having their own sigurats, which our historian Vedvir Aryaji can greatly explain. The ancient Iran, the ancient Iraq had the temple worshipping system. So temple worship system, or the Egyptians have beautiful temple worshipping system. What we call Garbhagriha, like earlier G sir was saying, they used to call it Garbhagrah. So this is an ancient-most form of worship, sacred sanctity, and has it, and we are consolidating an energy center. And that energy, beyond any theory or philosophy, can give solace, comfort, prosperity, goodness to the people. That's the whole idea of a temple, an energy consolidation center. May Lord Ram bless us all. May Devata and all the Upadevatas, shower their energy on all of us. Jai Ram. Yes, because the fact, of course, is very clearly that the Ram Lalla also is a very special idol with Virarya as well, and it will be first, of course, taken in a kalash, to the Saryu River as well, and there will be various cleansing rituals done to the Ram Lalla idol. So, is there something special which is being done this time around, or is it usual at other temples too? No, I think the Prana Pratishtha, the ritual, has been very well explained in our ancient text as well as numerous Sanskrit text. I think two acharyas are sitting here. They have already explained about that Prana Pratishtha ritual. But if you see historically, from the Rigvedic period onwards, the way during the Vaidika Yajnas, there is a ritual of Devatahvana.
you will be inviting the devatas and you are even offering a seat, asana. So the bhakti, upasana, these two words are very, very important in us. These are very emotional, especially when we see for in every devotee, he want to sit very close to the devata and he want to personally see the devata, but it's not possible for everybody's life to be during the time of those great personalities, those incarnated on this great nation called India, Bharat. So those actually in bhakti we want to sit in front of our Aradhya. So for to get that energy between Bhakta and Bhagwan, this Pran Pratishtha is very, very important. So that ritual is being performed. So these 7 days are very, very important. And this way to actually re-energize that place, because this was almost 500 years is the period where we lost. So we have to do more rituals to get that energy at that place, and then this becomes the one of the greatest place of worship for us. Yes. आचार्य रावत जी, ये राम लल्ला ये जो मूर्ति है, इसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ खास किया जाएगा स्थापना से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले? देखो, कोई भी मूर्ति के अंदर राम लला की है, यानी उनका जो बाल्यकाल है उस प्रकार की मूर्ति है, तो उस मूर्ति के अंदर जितने भी संस्कार होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण डालना, प्राण प्रतिष्ठित करना, यानी मूर्ति के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा, यानी उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाए जैसे कि एक मनुष्य के अंदर होता है, तो भगवान के अंदर जो होता है, तो वो एक कंसेप्ट होता है। इसके अंदर भगवान के अंदर जितने बच्चों के अंदर संस्कार होते हैं, वो संस्कार सारे इन मूर्ति के अंदर डाले जाएंगे। एक होती है कि मूर्ति जो बहुत वयस्क होती है, बुजुर्ग होती है, यानी उनके एक रूप होता है, उन रूपों के अंदर जो उनका चरित्र होता है, जो उनकी सोच होती है, उसके आधार पर मंत्रों का जाप होता है। तो यहां पर 16 की 16 जो संस्कारों की विधि होती है, जिसमें इनके अध्ययन तक की जो चीजें होंगी, उन सब के मंत्रों का आह्वान होगा, शिक्षा तक का, वनगमन तक का, युद्ध जीतने तक का, जो जो चीजें होती हैं, उनमें संकल्प लेकर के यजमान जो होते हैं वो संकल्प ले लेकर के उन चीजों को मंत्रों के द्वारा इसमें किया जाता है। तो ये जो मूर्ति है एक स्वरूप है, क्योंकि हमारे जो भगवानों के स्वरूप हैं, अभी जैसे शिव शंकर हैं, उनका स्वरूप बाल्य नहीं है, उनका एक वयस्क रूप होता है। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्तियों की कल्पना है, वो इसी प्रकार से राम लला, यानी उनका कहीं ना कहीं बाल्यकाल जो है, वो जो रूप होगा ना, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। तो उस रूप की मुझे लगता है इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाकी जो वहां के जो आचार्य हैं, जो इसकी देख रेख कर रहे हैं, वो खुद कहीं ना कहीं, हमारा काशी विद्युत परिषद होता है जो बड़ी सबसे बड़ी संस्था होती है विद्वानों की, जिसमें वेदों के आचार्य होते हैं सभी, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, मुहूर्त विशेषज्ञ होते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी होते हैं, कर्मकांड विशेषज्ञ होते हैं। तो वो सब इसको तय करेंगे। लेकिन जितना हमें इन चीजों का ज्ञान है, जितना हम अध्ययन कराते हैं, पढ़ाते हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है बाल स्वरूप की पूजा के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की जाएगी। जी बिल्कुल। मैं आचार्य मिश्रा जी के पास भी चलता हूँ इसी मुद्दे पर। आचार्य मिश्रा जी की राम लल्ला की जो मूर्ति है उसमें क्या अद्भुत है, और आचार्य मिश्रा जी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है कितना देर चलेगा, शुभ मुहूर्त कैसे चुनी गई, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान का जो बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप जब रामचरितमानस में बाबा तुलसी जी ने जो रचना की, तो वहां ये कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान का जन्म नहीं, भगवान प्रकट हुए, तो प्रकट होने के बाद भगवान जिस रूप में थे बिल्कुल वैसे ही आए, यानी चतुर्भुज रूप में भगवान आए हैं। और माँ कौशल्या प्रार्थना करती हैं, प्रभु सुबह के दिन, कल के दिन कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि इनके यहाँ बालक का जन्म नहीं हुआ है, बिल्कुल विराट रूप का जन्म हुआ है, ये कैसे संभव है। तो माँ कहती हैं
कि कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु शिशुलीला कीजिए, यानी बाल रूप में आइए। तो भगवान बाल रूप में प्रकट हुए थे कौशल्या माता के गोदी में। तो बिल्कुल आज वही बाल रूप की प्रतिष्ठा जो है उसी रूप की इसलिए की जा रही है कि भगवान बाल रूप में ही वहां पर प्रकट हुए थे, आए थे। दूसरी बात, प्रतिष्ठा की जो विधियां जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सप्तदिवसीय जो कार्य है वो क्रमानुसार एक एक करके वो जो क्रम जिस दिन का होता है वो विद्वानों के माध्यम से बिल्कुल वह वैसे ही होता रहेगा। अंत में जब जो मुख्य यजमान है प्रधानमंत्री जी, उनके माध्यम से जब आंख की पट्टी खोली जाती है तो एक क्रम होता है कि भगवान के आंखों के सामने पहली बार दर्पण दिखाया जाता है। और दर्पण इसलिए दिखाया जाता है कि इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा उसमें आ जाती है मूर्ति में कि पहली बार कोई अगर देखे भगवान की तरफ तो वह अंधा भी हो सकता है। इसलिए पहली बार भगवान को दिखाया जाता है दर्पण के माध्यम से, शीशे के माध्यम से। इसके बाद फिर जो है मुख्य यजमान दर्शन करता है, इसके बाद सभी दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। तो यह क्रम होता है। इसके बाद भगवान की आंखों में काजल लगाया जाता है, शहद का भी सोने की सलाखा से शहद भी लगाया जाता है। तो ये प्रक्रियाएं बड़ी अद्भुत हैं और ये मुझे लगता है कि जो विद्वान हैं, विद्वानों के माध्यम से, बड़े विधि विधान से, बड़े श्रद्धा भाव से, देखिए विधान भी आवश्यक है लेकिन भाव भी आवश्यक है, श्रद्धा भी आवश्यक है। और आज ये श्रद्धा ही है जो इतने वर्षों के बाद, ये भाव ही है कितने वर्षों के बाद ये जो शुभ कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो बड़े विधि विधान के साथ, बड़े नियम संयम के साथ, बड़ी साधनाओं के साथ और बड़े श्रद्धा भाव के साथ ये कार्य संपन्न होगा। और मुझे लगता है कि जो सनातनी है, सनातन को, धर्म को मानने वाले, जानने वाले राम के भक्त हैं, वो सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं इस भाव को लेकर के। भगवान बाल रूप में प्रसन्न होकर के माता कौशल्या ने जैसे प्रार्थना की थी कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला परम अनुग्रह में माना, भगवान वही अनुग्रह करने के लिए अवध धाम में पुनः विराजमान हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.